हेलो एवरीवन। आस्क ब्रिजेश वेल शो के आज के एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो लाइव की ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वी आर एनालाइजिंग एन आईपीओ, अपकमिंग आईपीओ विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सो उस आईपीओ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में आई बी शेयरिंग द एनालिटिक्स, उसके एनालिसिस में शेयर करने वाला हूँ। माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी अ रिकमेंडेशन वीडियो wherein I'll be sharing that whether you should or whether you should not apply for this IPO. That you will have to decide on your own. वो आपको अपने खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आपके लिए ये आईपीओ सुटेबल है कि नहीं। बट वो डिसीजन के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट आई विल बी शेयरिंग थ्रू दिस वीडियो. So let's jump into the analysis of JSW Infrastructure Ltd. Let's start with the information about the IPO detail. So JSW Infrastructure IPO is a book build issue of rupees 2,800 crores, 2,800 crores. I'm sorry. The issue is entirely a fresh issue. ये पूरा फ्रेश इशू है. दे आर नॉट, promoters are not selling any equity, so there is no offer for sale. It is around 23.53 crore of shares. So JSW Infrastructure IPO opens for the subscription on 25th September 2023 and it will close on the 27th September 2023. उसकी जो अलॉटमेंट है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय द October 3rd 2023 और उसकी लिस्टिंग है वो बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे होने वाली है. एंड द टेंटेटिव लिस्टिंग डेट इज अराउंड October 6, 2023. ये आईपीओ की जो प्राइस बैंड तय की गई है, सो एट द लोअर एंड इट इज प्राइस एट ₹130 एंड एट द हायर एंड इट इज प्राइस एट ₹119 per share. The minimum lot size is of 126 shares. So amount required will be rupees 14,994. JM Financial Limited, Axis Capital Limited, Credit Suisse Securities India Private Limited, Capital Advisors Limited, formerly IDFC Securities, and HSBC Securities and Capital Market Limited, and ICICI Security Limiteds, Kotak Mahindra Capital Company Limited, and SBI Capital Markets Limited are the book running lead managers of the IPO, and KFin Technologies is the registrar of the IPO. व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस आईपीओ? किस ऑब्जेक्ट को सर्व करने के लिए ये पैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट से इकट्ठा कर रही है? सो द कंपनी की जो यूटिलाइजेशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द आईपीओ, उसकी जो इंटेंशन है, जो उसकी ऑब्जेक्ट्स है, वो है सबसे पहली जो है वो है प्री पेमेंट और रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ द सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द वॉल्यू ऑन सब्सिडरीज. उनकी जो वॉल्यू ऑन सब्सिडरीज है जैसे कि JSW थर्मातर पोर्ट लिमिटेड एंड JSW जयगढ़ पोर्ट लिमिटेड, उनकी जो बोरोइंग है उसमें से फुल्ली और पार्टली पे करने के लिए ये पैसे बाजार से उठाए जा रहे हैं आईपीओ के थ्रू. दूसरी जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट इन दी wholly owned subsidy JSW जयगढ़ पोर्ट लिमिटेड for proposed expansion and upgradation works at Jaigarh Port, that is expansion of LPG terminal and setting up of an electric substation and purchase and installation of dredgers. So जो उनकी जयगढ़ के पोर्ट के ऊपर जो फैसिलिटीज़ है उनको एक्सपांशन और उसकी अपग्रेडेशन के लिए कैपिटल जो चाहिए वो है इस आईपीओ के थ्रू इकट्ठा की जा रही है. तीसरा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट in the wholly owned subsidiary of JSW Mangalore Container Terminal Private Limited for the proposed expansion at the Mangalore Container Terminal. और चौथा जो ऑब्जेक्टिव है डेट इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. सो बेसिकली कुछ सब्सिडरीज की डेट को रीपे करने के लिए, कुछ सब्सिडरीज की एक्सपांशन और अपग्रेडेशन के लिए ये कैपिटल इकट्ठा की जा रही है. सो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू विच मीन्स ये पैसे है वो बिजनेस की एक्सपांशन में यूज किए जाने वाले हैं. तो इस पैसे से आगे जाके कंपनी का बिजनेस बढ़ने वाला है. अगर कंपनी के बारे में बात करें तो इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2006. It provides maritime related services including cargo handling, storage solutions and logistics services. कंपनी पोर्ट और पोर्ट टर्मिनल को डेवलप करती है और ऑपरेट करती है अंडर द पोर्ट कंसेशन स्कीम्स. JSW Infrastructure Ltd is part of the JSW Group. The company partners with JSW Group customers, that is related parties, to pursue growth initiatives.
JSW Infrastructure is the second largest commercial port operator in the country in terms of cargo handling capacity in the financial year 2022. The company currently handles various types of cargo, including dry bulk, break bulk, liquid bulk, gases and containers. The company currently handling cargo also includes thermal coal, coal other than thermal coal, iron ore, sugar, urea, steel products, rock phosphate, molasses, gypsum, brights, laterites, edible oil, LNG, PNG and containers. ये कंपनी है वो जो JSW Infrastructure ports and port terminals typically have long concession periods ranging between 30 to 50 years, providing the company with the long-term visibility of revenue streams. The company has a presence across India with non-major ports located in Maharashtra and port terminals located in major ports across the industrial regions of Goa, Karnataka on the west coast, and Odisha and Tamil Nadu on the east coast. JSW Infrastructure's international presence includes two terminals at Fujairah and Dibba in the UAE. JSW Infrastructure Limited operates 9 port concessions in India with an installed cargo capacity of 158.43 metric ton per annum as of the June 30, 2023. The company's installed cargo handling capacity in India has grown at a compounded growth rate of 15.27 from March 31, 2021 to March 31, 2023. तो ये थोड़ी सी कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उसके बारे में हमने आपसे शेयर की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द JSW इंफ्रास्ट्रक्चर. So, as I mentioned earlier, it is the second largest commercial port operator in India in terms of cargo handling capacity in an industry where entry barriers are very high due to substantial investment requirements, long gestation periods, and significant regulations. So, ये entry barrier वाले फील्ड में the company enjoys the second position. दूसरी अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, इट हैज़ अ प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू ड्रिवन बाय लॉन्ग टर्म कंसेशंस. Contractual agreement where an entity is granted rights to operate a specific port or terminal by a port authority for a defined period in exchange for fees or revenue sharing, with an average balance concession period of 25 years as of June 30, 2023. तो उनके जो टर्मिनल ऑपरेट करने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पोर्ट अथॉरिटी के साथ, वो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देते हैं रेवेन्यूज की. अगर वीकनेसेस के बारे में बात करें, the company relies heavily on its top 5 customers for a significant portion of its revenue, accounting for 54.2% of the total revenue. So there is a customer concentration. The top client, which is related party company, contributes 41.4% of the company's revenue. This concentration of revenue from a small number of clients poses a risk, as any adverse changes in these relationships or their business activities could impact the company's financial stability. दूसरी जो वीकनेस के बारे में बात करें तो यूज रिलायंस ऑन कंसेशंस ऑन लाइसेंस एग्रीमेंट्स from government and quasi-government organizations to operate and grow businesses. So any change in the government policy may adversely impact JSW Infrastructure's business operations. रिस्क फैक्टर के बारे में अगर बात करें हम, तो आई एम हाईलाइटिंग टॉप 4 रिस्क जो इन्वेस्टर को जानना जरूरी है. अगर आपको डिटेल रिस्क फैक्टर जानने तो आप उसकी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं. सो पहली जो रिस्क है, सो जो भी वीकनेस भी है उनकी, जैसे हमने डिस्कस किया था, इट रिलाइज ऑन कंसेशन एंड लाइसेंस अरेंजमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस to operate and grow their businesses. They have several obligations under these agreements, and breach of these terms could lead termination, which could materially or adversely impact the business result of operation and financial conditions and cash flows. दूसरी जो रिस्क है, द एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर कैपेसिटी एनहांसमेंट इश्यूड टू अ सब्सिडियरी, that is South West Port Limited, has been challenged before the National Green Tribunal and is subject to the outcome of certain other litigations. Any adverse outcome in these litigations may have an adverse impact on business, financial condition, and result of operations and cash flows. तीसरी रिस्क के बारे में बात करें हम, so they have entered into and may continue to enter into substantial amount of related party transactions with the entities of other JSW group entities. So there is a red signal when the promoter is engaged in a related group transaction. So you need to consider this as a risk factor.
चौथा जो रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो, the company derives substantial portion of revenue from top 5 customers, two of which are also a related party. If such customers were to suffer a deterioration of their business, cease doing business with the company, or substantially reduce dealings with the company, revenues could decline, which may have a material adverse impact on the business, result of operation, cash flows, and financial conditions and the future of the company. So, if you want to opt for this IPO, you need to consider this risk factor, right? अगर हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, so let me share my financial slide with you because it will help you to understand the finances of the company. तो आप देख सकते हैं कि उसकी रेवेन्यू 31 मार्च 2020 में थी 1237.37 करोड़, उससे बढ़ते हुए 31 मार्च 2023 को हो चुकी है 3270.72.85 करोड़। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 2020 में उसकी टैक्स थी, पीएटी थी 196.53 करोड़, जो 31 मार्च 2023 में बढ़ के हो चुकी है 749.51 करोड़। नेटवर्थ की बात करें तो वो थी 2488.23 करोड़ ऑन दी 31 मार्च 2020, वो बढ़ के हो चुकी है 3934.6.4 करोड़ इन दी 31 मार्च 2023. So you can see that it is consistently growing, right? If you consider the period of COVID, it has also grown from the pre-COVID period, और post-COVID भी वो grow कर रही है. So from the growth perspective, it is growing. अगर हम पीयर से कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो पीयर कंपैरिजन में हम देखने जाए तो अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड इज दी पीयर कंपैरिजन. तो हम बेसिक ईपीएस की कंपेयर करें तो जेएसडब्ल्यू की 4.12 बेसिक ईपीएस है, वेयर अदानी पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड की 24.58 है. एनएवी की बात करें तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की एनएवी 21.88 है, वेयर अदानी पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड की जो एनएवी है वो डेट इज 211.02. और अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की पैरामीटर की बात करें तो द कंपनी इज परफॉर्मिंग बेटर देन दी अदानी पोर्ट. उनकी जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है डेट इज बेटर देन दी अदानी पोर्ट्स. सो आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस बेसिस पे भी वो जो लिस्ट कंपनी से उसके कंपैरिजन में अच्छा सा परफॉर्म कर रही है. सो अगर हम समराइज करें, उसकी कंक्लूजन पे आए, तो अगर क्वालिटी के बारे में बात करिए तो 3 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 12.4% से बढ़ा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 12.8% से बढ़ा है. इनकी रिटर्न आई है. And in FY23, the company's ROE was around 18.3 and return on capital employed was around 19.5% respectively, which is very decent. Capital पे अगर 18.3% रिटर्न आ रहा है तो इट इज़ अ गुड क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है. अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो उसकी रेवेन्यू है वो FY22 और FY23 को मिला के 40.5% से बढ़ी हुई है, और अगर उसकी हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 41.7% से बढ़ी हुई है. वैल्यूएशंस देखने जाए तो स्टॉक्स विल बी प्राइस एट अ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स ऑफ 28.87 ऑन द अपर एंड, और प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 3.5 टाइम्स. सो एज कंपेयर टू अदानी पोर्ट्स जो पी है डेट इज अराउंड 20.86 एंड प्राइस टू बुक इज 3.8 टाइम्स. तो वैल्यूएशंस उन्होंने जो मार्केट में लिस्टेड जो कंपनी है उसके पैरेलली सेट किए हुए हैं. सो कंक्लूड करें अगर हम इस कंपनी की एनालिटिक्स को, द कंपनी हैज़ अ competitive edge due to high entry barriers and strategic port locations, but it's notable that a significant portion of its revenue, that is 60.6%, comes from related party, which is JSW Group. This reliance on related party has decreased from 75.2% in FY21 to 60.6% in FY23, potentially reducing concentration risk. So कंपनी का फोकस लग रहा है कि वो अपनी जो ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी है उसकी रिलायंस कम करे और आगे मार्केट में जाके बिजनेस लेके आए. सो आई होप ये आज की जो वीडियो है वो आपको वेदर यू शुड गो फॉर द JSW इंफ्रास्ट्रक्चर IPO और नॉट, उसको डिसाइड करने में हेल्प करेगी. इफ़ यू विश टू फोकस ऑन कीप इन ग्रोइंग योर मनी और इस तरीके की आप वैल्यूएबल कंटेंट चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल सर्च करके फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लानट, उसकी बेल आइकॉन लाइक करके आप बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए, या तो आप मेरे ब्लॉग पे मेरे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं planetwealth.in,
या आप मेरी पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। सारे लीडिंग पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे आपको प्लैनेट वेल्थ विथ फाइनेंशियल फ्रीडम विथ प्लैनेट वेल्थ मिल जाएगी। आप मेरे पेज से, प्लैनेट वेल्थ पेज से भी जुड़ सकते हैं। और बेस्ट वे टू कनेक्ट विथ दिस काइंड ऑफ क्वालिटी कंटेंट इज टू जॉइन माय फेसबुक ग्रुप फाइनेंशियल वेलबींग, और send a WhatsApp message on 9328190022। एड मी आपका नाम लिख के कर दिए तो आई विल बी एडिंग यू ऑन माय फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप। But make sure you save this number on your mobile, because broadcast messages are received only if this sender's number is stored on your mobile. So store 9328190022 in your mobile as planned well, and then send a WhatsApp message, add me and आपका नाम लिख के मैसेज भेज दीजिए। I'll be adding you on my financial literacy broadcast, so that whenever I am releasing a valuable personal finance or investment related content on any of my social channels or my blog or etc., you will be getting a notification, so that if you want to use that, you can use it in your favor. If you have any questions, feel free to ask questions। आप अभी लाइव देख रहे हैं तो आप कमेंट में भी अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड पे भी आप अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी वीडियो देखने के लिए आई विल बी थैंकफुल टू यू। और अगली इस तरीके की लाइव कंटेंट लेके मैं आपके सामने ऐसे ही उपस्थित रहता हूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। गुड डे, एंजॉय योर संडे।